नमस्कार दोस्तों, आज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज ब्रिक मेसनरी में हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये फ्लेमिश बॉन्ड है क्या। व्हाट इज फ्लेमिश बॉन्ड? तो फ्लेमिश बॉन्ड इज अ ब्रिक लेइंग पैटर्न वेयर स्ट्रेचर्स एंड हेडर्स आर लेड अल्टरनेटली इन अ सिंगल कोर्स। यानी कि जो हम फ्लेमिश बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें क्या है, स्ट्रेचर और हेडर एक के बगल में एक अल्टरनेटली ले किए जाते हैं एक ही कोर्स में। तो ये जो है ब्रिक लेइंग पैटर्न की बात हो गई। फिर दूसरी बात है, फ्लेमिश बॉन्ड इज एस्थेटिकली अट्रैक्टिव। फ्लेमिश बॉन्ड जो है देखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है, अच्छा लगता है देखने में। लेकिन ये इंग्लिश बॉन्ड से जो है कमजोर होता है फॉर लोड बेयरिंग मेसनरी या लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। तो हालांकि फ्लेमिश बॉन्ड आपका अच्छा खूबसूरत दिखता है, बट इसकी स्ट्रेंथ जो है इंग्लिश बॉन्ड से सेम थिकनेस ऑफ वॉल से कंपेयर करेंगे तो कम होती है। फिर इट इज यूज फॉर वॉल्स दैट आर जनरली टू ब्रिक थिक। यानी कि ये जो है पतली वन ब्रिक के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है, इसका हम जनरली इस्तेमाल करते हैं टू ब्रिक थिक वॉल के लिए। तो ये कुछ फ्लेमिश बॉन्ड की बात हो गई। एक बार फिर इसको समझते हैं कि फ्लेमिश बॉन्ड में होता क्या है। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, जो ब्रिक एक कोर्स में लिए के जाते हैं वो अल्टरनेटली स्ट्रेचर और हेडर दिखाते हैं। इस चीज़ को हम एलिवेशन में देखते हैं। तो ये आप एलिवेशन में देख रहे होंगे। इसमें क्या है, जैसे नीचे से बात करते हैं। नीचे सबसे पहला कोर्स स्ट्रेचर है। स्ट्रेचर के बाद नीचे फर्स्ट कोर्स में देखेंगे तो आप पहले स्ट्रेचर दिखाई पड़ेगा, फिर हेडर दिखाई पड़ेगा, फिर स्ट्रेचर दिखाई पड़ेगा, फिर हेडर दिखाई पड़ेगा। फिर जब हम सेकंड कोर्स में चलते हैं तो पहले हमको हेडर दिखाई पड़ता है, फिर एक क्वीन क्लोजर है, उसके बाद फिर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्लेमिश बॉन्ड है, इट इज रिपीटिशन ऑफ अल्टरनेट स्ट्रेचर एंड हेडर इन ऑड एंड इवन कोर्स। यानी कि ऑड कोर्स में भी स्ट्रेचर और हेडर का रिपीटिशन होता है, और इवन कोर्स में भी स्ट्रेचर एंड हेडर का रिपीटिशन होता है। तो ये तो हो गया हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। अब फ्लेमिश बॉन्ड दो तरह के होते हैं। अ, जैसे ये फिगर में आप देख रहे होंगे, ये एक फ्लेमिश बॉन्ड का आइसोमेट्रिक व्यू है। तो फ्लेमिश बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड एंड डबल फ्लेमिश बॉन्ड। अब सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल फ्लेमिश फ्लेमिश बॉन्ड में दीवार का एक साइड का फेस जो है वो फ्लेमिश बॉन्ड में होता है, और दूसरा साइड का जो फेस है वो किसी और बॉन्ड में हो सकता है। यानी कि दीवार के एक फेस पे हमको स्ट्रेचर हेडर अल्टरनेट होते हुए हर कोर्स में दिखाई पड़ते हैं। बाकी दीवार का जो दूसरा फेस होता है उसमें आपका ये पैटर्न चेंज भी हो सकता है। तो ऐसा अगर होता है, दीवार का एक फेस स्ट्रेचर बॉन्ड में और दूसरा फेस किसी और बॉन्ड में, तो इसको हम सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। वहीं पे अगर दीवार के दोनों फेसेस में ही स्ट्रेचर बॉन्ड है, स्ट्रेचर बॉन्ड सॉरी फ्लेमिश बॉन्ड है, अगर दीवार के दोनों फेसेस पे ही फ्लेमिश बॉन्ड हमको दिखता है, तो इस तरह की दीवार को हम बोलते हैं कि ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड में बना है। अब ये जो आप आइसोमेट्रिक व्यू देख रहे हैं, ये एक डबल फ्लेमिश बॉन्ड में बनी वॉल का है, कॉर्नर वॉल का है, राइट एंगल जंक्शन का। तो ये डबल फ्लेमिश में बना है क्योंकि इसके फ्रंट फेस पे और रियर फेस पे दोनों साइड में आपको स्ट्रेचर हेडर दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें लैप कैसे अचीव किया गया है, द लैप इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसिंग अ क्वीन क्लोजर नेक्स्ट टू द क्वाइन हेडर इन द एवरी कोर्स। तो इसमें लैप जो है क्वीन क्लोजर को जो है यूज करके किया गया है। और क्वीन क्लोजर कहाँ लगाया गया है, तो जो कॉर्नर ब्रिक है, तो जो हेडर फेस होता है उसके बगल में हम क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा पॉइंट तो आपको मालूम ही है कि जो सेम थिकनेस की वॉल है, तो ये जो फ्लेमिश बॉन्ड में बनी वॉल होती है, इट इज़ वीकर देन दी वॉल कंस्ट्रक्टेड इन इंग्लिश बॉन्ड फॉर द सेम थिकनेस। तो ये कुछ बातें हो गई, महत्वपूर्ण बातें फ्लेमिश बॉन्ड की। हमें टाइप ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड भी पता चला कि दो तरह के हैं, एक सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है और एक डबल फ्लेमिश बॉन्ड है। तो आइए इसी चीज़ को समराइज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में कभी हमसे पूछा जाता है कि व्हाट आर दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड या व्हाट इज फ्लेमिश बॉन्ड, तो इसमें ये हम चार पॉइंट जो है लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है, हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स आर लेड अल्टरनेटली इन सेम कोर्स। सेम कोर्स याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेचर्स और हेडर्स एक के बगल में एक अल्टरनेटली ले किए जाते हैं एक ही कोर्स में। एवरी हेडर इन ईच कोर्स लाइज सेंट्रली ओवर एवरी स्ट्रेचर ऑफ द अंडरलाइंग कोर्स। तो जो
इवन नंबर पे हेडर आ रहा है, इवन नंबर के कोर्स में जो हेडर आ रहा है उसकी आप पोजीशन अगर देखेंगे तो ये नीचे वाला कोर्स उसके जो ऑड नंबर ऑफ कोर्स होता है उसके ठीक बीच में आता है। तो यही ये कहना चाह रहा है कि एवरी हेडर इन ईच कोर्स लाइज सेंट्रली सेंट्रली ओवर एवरी स्ट्रेचर ऑफ द अंडरलाइंग कोर्स। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इन एवरी अल्टरनेट कोर्स अ क्वीन क्लोजर इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द क्वाइन हेडर। क्वाइन हेडर मतलब कॉर्नर का जो हेडर होता है उसके बगल में, सो एज टू प्रोवाइड अ लैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाफ 2.5 इंच। तो क्योंकि क्वीन क्लोजर जो है वो हेडर फेस को मतलब अलोंग दी लेंथ काटते हैं हम ब्रिक को, तो 4.5 इंच के आसपास होता है। तो लगभग 2.25 इंच का हमको क्वीन क्लोजर प्लेस करने से लैप मिल जाता है। फिर चौथा पॉइंट है, ब्रिक बैट्स आर टू बी यूज्ड इन वॉल हैविंग थिकनेस इक्वल टू एन ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक। तो इसमें जो ब्रिक बैट होता है यानी कि हाफ ब्रिक, इसका इस्तेमाल जो करते हैं तो इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक। इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। अभी यहाँ पे इसको समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब हम प्लान पे डिस्कशन कर रहे होंगे फ्लेमिश बॉन्ड के तब हम इसको समझेंगे। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड की। तो बेसिकली तीन एडवांटेजेस यहाँ पे समराइज किए गए हैं फ्लेमिश बॉन्ड के। सबसे पहला एडवांटेज है कि इट इज़ हाईली इकोनॉमिकल, यानी कि फ्लेमिश बॉन्ड इज़ हाईली इकोनॉमिकल। जो सेकंड एडवांटेज है वो है वॉल्स इन वन ब्रिक thickness are easier to produce a fair face on both sides in Flemish bond than in English bond। यानी कि फ्लेमिश बॉन्ड में अगर हम वन ब्रिक वॉल बनाते हैं तो दोनों साइड का जो फेस मिलता है वो हमको साफ मिलता है। जनरली होता क्या है, जिस साइड मेसन खड़ा होता है उस साइड का फेस साफ होता है, दूसरी साइड का फेस जो है वो आपका क्लीन नहीं मिलता है। लेकिन फ्लेमिश बॉन्ड में ये पॉसिबल होता है कि हम दोनों साइड का जो फेस है उसको क्लीन बना सकें। जो थर्ड एडवांटेज है फ्लेमिश बॉन्ड का वो ये है कि द अपीयरेंस ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड इज मोर अपीलिंग टू द आई देन इंग्लिश बॉन्ड। यानी कि जो आपका फ्लेमिश बॉन्ड है ये देखने में इंग्लिश बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा खूबसूरत होता है। अब आइए इसी को हम प्लान में समझते हैं। तो ये आप एक प्लान देख रहे हैं जो कि सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में बनी वॉल का, या एक कोर्स कह लीजिए, एक कोर्स है। तो इस कोर्स में जब आप फ्रंट में देख रहे होंगे तो फ्रंट में आपको स्ट्रेचर, देन हेडर, देन स्ट्रेचर, देन हेडर दिख रहा है। और इसमें तीन तरह की जो है खास ब्रिक इस्तेमाल की गई है और एक नॉर्मल ब्रिक है। नॉर्मल ब्रिक जो है के साथ साथ एक क्वीन क्लोजर है, 3/4 बैट है और हाफ बैट है। तो ये तीन तरह के आपके बैट्स हो गए, क्वीन क्लोजर, 3/4 बैट और हाफ बैट। इसका इस्तेमाल किया गया है। और नॉर्मल ब्रिक का इसका इस्तेमाल करके आपने इसमें सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड बनाया है। तो ये सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है 1.5 थिक ब्रिक थिक वॉल में। तो इसके बारे में बात करते हैं। द बॉन्ड प्रोवाइडेड इन वॉल विद फ्लेमिश बॉन्ड इज फेसिंग एंड इंग्लिश बॉन्ड इन बैकिंग। ये सिंगल फ्लेमिश है, इसको हम क्रॉस बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये प्लान में आप देख पा रहे होंगे, इसका जो फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस में हमको जो फेसिंग वॉल है उसमें स्ट्रेचर दिख रहा है, फिर हमको हेडर दिख रहा है, फिर स्ट्रेचर दिख रहा है, फिर हेडर दिख रहा है। इसी के ऑपोजिट साइड में आप देखेंगे तो सिर्फ हेडर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका फ्रंट जो है ये फ्लेमिश बॉन्ड में है और रियर साइड जो है आपका ये इंग्लिश बॉन्ड में है। वहीं लेफ्ट साइड की वॉल अगर देखेंगे तो आपको पहले फेस पे क्या दिखेगा, हेडर, क्वीन क्लोजर, देन स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, और यही स्ट्रेचर हेडर का पैटर्न फिर रिपीट रिपीट हो रहा है। इसके ऑपोजिट साइड में देखेंगे तो आपको स्ट्रेचर्स दिख रहे हैं खाली। तो अगर इसी पैटर्न को आप फिर इंटरले ओवरले कर दें, यानी कि जो फ्रंट फेसिंग वॉल है वो आपके लेफ्ट साइड में चली जाए और लेफ्ट साइड की वॉल फ्रंट फेसिंग में आ जाए, तो फिर क्या होगा, फेस तो आपका फ्लेमिश बॉन्ड में रहेगा, लेकिन फेस के जो ऑपोजिट साइड की वॉल है वो इंग्लिश बॉन्ड में बन जाएगी। तो ये 1.5 ब्रिक जो है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है। दिस बॉन्ड
combines the advantage of both English bond and Flemish bond and simultaneously eliminates their disadvantage. तो ये 1.5 ब्रिक जो थिक वॉल है, इसमें क्या है, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है, और जो दोनों तरह के बॉन्ड में डिसएडवांटेज होते हैं वो यहाँ पे अवॉइड हो जा रहे हैं. दिस बॉन्ड इज रिकमेंडेड वेयर कॉस्टली ब्रिक्स आर specified for facing in order to provide good appearance to the wall. Also, it can be made more economical by using cheap quality of bricks on the back of the wall. तो यहाँ पे दो तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है या कर सकते हैं. फ्रंट फेसिंग पे अच्छी कॉस्टली ब्रिक जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फेस को इम्प्रूव करने के लिए, और इंटीरियर साइड में आप जो है इकोनॉमिकल ब्रिक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अंदर अगर प्लास्टर करना है, मान लीजिए बाहर एक्सपोज ब्रिक रखना है और अंदर प्लास्टर करना है, तो बाहर जो है आप जो है अच्छी ब्रिक का, कॉस्टली ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनसाइड में चीपर ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो लास्ट पॉइंट है, ऑन द अदर हैंड, इट weakens the overall strength of the wall because of maximum use of brick and existence of continuous vertical joints. Also, be it cannot be provided in walls having thickness less than 1.5 brick. तो ये एक डिसएडवांटेज है कि ये इसका स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाता है. दूसरा, ये 1.5 ब्रिक से कम की थिकनेस में नहीं बनाया जा सकता है. और एक डिसएडवांटेज और है, क्योंकि यहाँ पे हम 3 तरह के बैट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको ब्रिक काटना बहुत पड़ेगा, तो ब्रिक का डैमेज एंड वेस्टेज भी यहाँ पे बढ़ जाता है, और ब्रिक लेइंग में टाइम भी ज़्यादा लगता है. तो ये इसका जो है एक कह लीजिए डिसएडवांटेज है. As we know, single Flemish bond can't be made in less than 1.5 brick thick wall, because to get the typical face appearance of Flemish bond, which is header and stretcher in same course in the front, and English bond appearance, that is headers in one course and stretchers in another course at the back, we use half bats as well, which are also known as snap headers or the false headers. Now let's see how we start the course 1 in 1.5 brick thick single Flemish bond wall. In course 1 of 1.5 brick thick single Flemish bond wall, we start the wall with placing 3 stretchers on the width of the wall. After that, we place a half bat in the front, also known as snap header or false header, and full header at the back. Then we place a stretcher in the front and 2 headers at the back. Thus, we get a regular arrangement of stretcher and header in the same course in the front and arrangement of headers in the same course at the back. Now we can repeat this arrangement to the desired length of the wall. And in course 2, we start with placing 2 3x4 bat as a header. Then we place 2 3x4 queen closure, and after that we place 3 stretchers on the width of the wall, and then we place a cluster of 6 bricks, which includes 2 headers in the front with 2 stretchers at the back and 2 stretchers in between them. And we can repeat this arrangement to the length of the wall, same as course 1. By doing so, we get an arrangement of stretcher and header in the front in the same course and arrangement of stretchers in the back in the same course, which is the typical Flemish bond appearance. Now, when we place course 2 above course 1 and other courses to complete our wall at certain height, you can see the face appearance of the wall in front have an arrangement of headers and stretchers in the same course without any vertical joints on the face, and an arrangement of English bond at the back, that is headers in one course and stretchers in another. And at the end you will see the bricks are extended. It is because of the way we placed the bricks at the starting of the wall in course 1 and course 2, which created a 1/3
header after every stretcher along the length of the wall. When we look closely, we will see that the course 2 of the second wall we just made is same as course 1 of first wall below. Only difference is that course 1 of the first wall below is rotated 90 degrees clockwise to be used as the course 2 of second wall. This is done so that the Flemish bond appearance of the wall come in front. Now we have completed our two courses, and you can see in the front side of the wall there are no vertical joints, and there is Flemish bond appearance in the front, which is after every stretcher there is a header. And at the back side you will see the English bond appearance, which is stretchers in one course and headers in another. At the L junction of two walls, you will see that no vertical joint is coming between them on the face of the wall, and they are acting as a lap joint between two walls at every course. Now we can start placing the courses alternatively by repeating the course 1 and course 2 to the desired height of the wall. So this is how we make right angle coin or L junction between two walls of 1.5 brick thickness in single Flemish bond. Now let's see the arrangement of bricks in two brick thick single Flemish bond. As we learned earlier, Single Flemish bond consists of facing of Flemish bond with the backing of English bond in each course. It is mostly used where expensive facing bricks are required to give characteristic appearance of Flemish bond, and where comparatively cheaper bricks are used as backing. This type of bond is mostly applied in walls having thickness of 1.5 brick or more. In front of you is the course 1 of the 2 brick thick wall in single Flemish bond. Here I have shown the stopped end arrangement also on both sides of the wall. Stopped ends are used to terminate the wall or end the wall. Now let's know the basic brick arrangement. For that, let's get rid of the stopped end from both sides and see our actual bond. The brick laying starts from a stretcher, then two headers, then a half bat, then again a stretcher, then a half bat, after that two headers, and at last a stretcher. Thus, by using 3 stretchers, 4 headers and 2 half bats, a cluster is formed. This cluster is repeated in the whole bond, and in between every 2 of these clusters over the length of the wall, 2 headers are placed in between 2 stretchers. To make a square stopped end of the wall, we have to place 3 stretchers and 2 queen closer half alternatively. That is, after every stretcher, a queen closure is placed on the width of the wall. Now, let's know the arrangement in course 2. When we remove the stopped end in course 2 and other bricks, we can see a cluster of 2 headers and 2 stretchers is formed, which is started by taking a lap of 1/4 from the course 1 below, so as to avoid continuous vertical joints. This cluster of 2 headers and 2 stretchers is repeated over the length of the wall in course 2, and in between these clusters a break of 2 headers is given to break the joints and give some strength to the bond. Now, to make the stopped end in course 2, we need to place 2 queen closure half and 2 headers at the end. Now, when we place course 2 above course 1, you can see how with the help of queen closure, we created a lap of 1/4, due to which vertical joints are avoided and bond is compact now. In the front face of the Flemish bond, we can see that the bricks are arranged in the Flemish pattern. That is, after every stretcher, there is a header in the same course. But on the other hand, on the back side of the Flemish bond wall, you can see the English bond arrangement of bricks. That is, headers in one course and stretchers in one course.
This is the beauty of Flemish bond. We can place low quality bricks in the inner portion of the wall and can use expensive face bricks on the outer face of the wall, which is in the Flemish pattern, when we're going to keep our wall in exposed brickwork. Now, if we want to close both the ends of the wall, then in course 1, we have to cover the 1/4 lap which we have created in 2 courses. For that, we have to add a half bat first on the same continued wall as before, then a header, and then again a half bat. And then in the end, we can just mirror the stopped end arrangement as on the left side of the wall we did in the beginning. And in the course 2, we will continue the pattern in the bond by adding one more cluster of 2 headers and 2 stretchers, and in the end we can mirror the same arrangement of stopped end as on the left side of the wall we did in beginning in course 2. Now, when we put course 2 above course 1, we can see our bond is perfect on both ends. There is no continuous vertical joint. The inner face of the wall is in English bond pattern and outer face is in Flemish bond pattern as it was before. Only this time we have stopped ends on both sides of wall. Now let's see the brick arrangement when we join 2 Flemish bond walls of 2 brick thickness. In right angle coin of the single Flemish bond or L junction, we have to join 2 Flemish bonded wall at 90 degrees without changing the Flemish pattern or disturbing the typical Flemish face appearance. As we know the typical Flemish bond pattern, which have Flemish appearance in the front and English bond appearance in the back. But when we join 2 right angled walls, we have to keep in mind when placing bricks in the external angle in a way that they doesn't change the appearance of the wall much and also avoid vertical joints in the face. When joining walls on right angles, we reverse the course in both walls. That is, the course 2 of one side of the wall become the course 1 of other side. When we continue the Flemish bond pattern in course 1 in one side of wall, starting with placing the stretcher at the back, then 2 headers in the middle, and then we place a half bat as a header, because the adjacent brick to it is a stretcher. So if we don't place a header, the Flemish pattern will be disturbed. Then again we place a stretcher in the front to continue the pattern and a 3/4 bat after that, and then a stretcher at the end. Queen closer half and queen closer quarter are placed in the middle to fill the voids and make a base to start course 1 of other side of wall. On other side of the wall in course 1, we place headers in the back and combination of headers and stretchers in the front, starting from the queen closer. And in course 2, we start with placing a header in the edge first, then queen closer. Then we place 2 stretchers in the front and 2 headers at the back, and then 2 headers in the front and back. And after that, we repeat the bond to the length of the wall. Now, on other side of the course 2, we place a 3/4 bat as a header in the front because the adjacent brick is a stretcher, which maintains the typical Flemish pattern of the wall in the front. Then we place a stretcher with the half bat in the front, a stretcher in the back, and 2 headers in the middle. The void created in the middle is filled by queen closer quarter. And then we continue the Flemish bond wall to the desired length. Thus, by using this method of joining 2 walls in right angle, you can see the appearance and strength of the wall in Flemish bond is not changed. This is all about single Flemish bond wall and its L junctions. Leave your comments for any doubts or questions. Like, subscribe and share if video was helpful to you.